So, good morning students. So, in the last class in miscellaneous, I have completed up to question number 10. So, now the important questions are there to the 11, 12, 13 and 14. So, they are important, and for entrance point of view that 16, 17, 18, 19 are also important, but for CBSE exam I think 11, 12, 13, 14 these are the important questions. So I will start from 11. तो हम 11 से दिखाएंगे. So the first question is question number 11. In question 11 you have given that so that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. मतलब हमको ये दिखाना है कि when there is a vector which is equally inclined to the axis, then the direction cosines must be 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले एक वेक्टर लेना पड़ेगा. तो पहले हमको एक्सिस को ड्रॉ करना है. सो लेट्स गो फॉर एक्सिस फर्स्ट. सो लेट्स टेक द एक्सिस फर्स्ट. तो एक्सिस का ऐसे लेते हैं. तो दिस इज x axis, sorry, y axis, then let this be x axis, and this is z axis. So the axes are like x axis, y axis and z axis. So this is x axis, so you can write as ox, oy and oz. So now you have to consider a vector you have to consider which is equally inclined to all the axes. So you can do what? You can take some different color. Say the color is this. Okay. So after that, this is the vector. This is say vector A, and let this vector makes equal angles, that is equally inclined to all the axes. Let the angle be like हम लोग एंगल्स को सेम एंगल दिया है, सो यू कैन टेक देम एज से इसको हम कलर देगा तो ऐसा होगा. सो दिस इज से थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. तो तीनों एंगल सेम है. जब तीनों एंगल सेम होगा तो हमको ये प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइन से नथिंग बट 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. सो you know that first हमको मानना होगा let the vector A makes angles. सॉरी हम इसको कलर वाइट में ब्लैक में लिखने से ठीक है. सो लेट इट बी, इसको काट देते हैं. सॉरी, लेट मी स्टार्ट बाय अगेन बाय let the vector A makes angles theta with all the axes, ये एंगल्स नहीं होगा, इट विल बी एंगल. हाँ, तो यू नो दैट if a vector makes angle theta, theta, theta with the ox, oy and oz, then you can find out their direction cosines. Then you know that direction cosines of A R क्या होगा? cos theta and cos theta. So
Now you can go by the property of direction cosines. Now we know that the property of direction cosine, if you take the sum of their squares, sum of their, if you take the sum of their squares, that is cos square theta plus cos square theta equal to 1. Therefore cos square theta is what? 1 by 3. So cos theta is what? Plus minus 1 by root 3. So you can take plus minus, but right now we need 1 by root 3, so you can take only positive 1. So therefore you have got direction cosines of A are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. So this is the proof you have got. वही हमको प्रूफ करना था. So that's all question number 11. Okay, the next question, that is question number 12. तो question number 12 is important question. यहाँ में हमको 3 vectors दिया है. तो इसमें given that, but some conditions given. First, given that the vector A, पहले हमको vectors को दिखाना. Vector A is given as I plus 4j plus 2k. I plus 4j plus 2k, and vector B is given as what? 3i minus 2j plus 7k. 3i cap minus 2j plus 7k. And the third vector, vector C, is given as, third vector is given as 2i minus j plus 4k. 2i minus j plus 4k. And some conditions given. Conditions are given that C dot, you have to calculate a vector D. So write in the next page better. So in the next page you have given that. So also given D is a vector which is perpendicular to, vector perpendicular to both A and B. Perpendicular to both A and B, and also given and C dot D equal to 15. तो ये हमको 2 कंडीशन गिवन है. तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक दिस कंडीशन जो गिवन है, उसको हम लोग एक नंबर दे देते हैं. लेट इट बी 15. तो हमको D को निकालना है. हमको 2 कंडीशन गिवन है. वन इज दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B. Another one is dot product with C is 15. ना, तो you know that when there is a vector which is perpendicular to 2 given vectors, then you can consider the vector as what? जब 2 वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा तो इसका किसका पैरेलल होगा? It will be parallel to their cross product. So therefore you can consider D as lambda into A cross B. क्योंकि ये A and B दोनों का परपेंडिकुलर है, so it must be parallel to A cross B. So therefore you can take D as lambda into A cross B. अभी A B दिया है, हमको lambda निकालने से D मिल जाएगा. So now first of all you go for A cross B. So A cross B क्या होगा? A cross B can easily you can calculate by the formula of determinant. So if you go by A cross B,
color, like some, better you take the red one. So next, say so I think it is okay. थोड़ा सा इधर तो ठीक है. तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी, ए का कंपोनेंट्स को पहले आई जे के आएगा. ओ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी आई जे के, आई जे एंड के. Then the vector components are, component of A are 1, 4, then 2. Then component of B are 3 minus 2, 7. 3 minus 2, 7. So you take the cross product, 28 plus 4, that will be 32 I cap. Then J का 7 minus 6 1 हो गया, इसका मतलब माइनस जे. देन के का -2 -12 -14 के. So therefore D you have got lambda into A cross B, that is 32 I cap minus J cap minus 14 K cap. तो D हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अभी लैम्डा निकालने से हमको D मिल जाएगा. तो हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, उसके लिए हमको जाना होगा 1 में. सो डू यू सी डॉट डी इक्वल टू 15. यूजिंग दिस कंडीशन यू कैन फाइंड आउट लैम्डा. सो नाउ स्टार्ट बाय 1. 1 implies C डॉट डी इक्वल टू 15. तो यहाँ से शुरू करते हैं. C मतलब C is given as 2i minus j plus 4k. 2i minus j plus 4k dot d. And what is d? Lambda into 32 I cap minus j minus 14k. But let me check whether our first क्रॉस प्रोडक्ट इज इट ओके और नॉट. क्योंकि इसमें गलती हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलती होगा. तो इसके लिए हमको पहले देखना होगा ए का कंपोनेंट स्केल है 142. 142 सही है. एंड बी का 3 minus 2 7. 3 minus 2 7 सही है. तो फर्स्ट आई के लिए होगा 28 plus 4 32. ठीक है. जे के लिए 7 minus 6 minus जे. के लिए -2 -12 -14. ठीक है. तो नथिंग रॉन्ग इज देयर. सो now you can continue. So 2 into 32 64 होगा. तो लैम्डा को हम बाहर रख सकते हैं. तो 64 देन माइनस जे मतलब माइनस माइनस प्लस 1. देन 4 इंटू -14 -56 इक्वल टू 15. तो देखते हैं कितना हो गया अभी. Therefore next लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 9. तो इधर 9 आ रहा है. तो 15/9. So you can cancel it. So finally the lambda is what? 5/3. So now you can substitute the value of lambda. You go to the next page. Value of lambda. Therefore you have got the value of lambda, so you have to substitute there. तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा. एक्चुअली फैक्टर किया था पेज 1 में. ये था ना d. तो ये होगा 32i minus j minus 14k. therefore d equal to 32i minus j minus 14k. okay. therefore d equal to 32i minus j minus 14k and whole into what? Lambda is 5/3.
So I think this is the answer. Let me check again whether it is correct or not. 5/3 आया है और this, so now this is the correct one. So you have got the answer for question number 12. So next goes to the question number 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? There is a vector, the scalar product with a unit vector along the sum of two vectors is equal to 1, then what is the lambda? तो इसमें एक अननोन लैम्डा है जिसको हमको निकालना है. तो यहाँ में हम लोग गिवन वेक्टर्स को कुछ नाम दे देते हैं. तो गिवन वेक्टर्स आर, जिससे हम लोग को थोड़ा फ़ायदा होगा लिखने के लिए. तो लेट्स टेक द वेक्टर्स एज ए. द फर्स्ट वेक्टर को हम ए मान लेते हैं. I plus j plus k, I plus j plus k, then b 2i plus 4j minus 5k, 2i plus 4j minus 5k, and c lambda I plus 2j plus 3k. 2j plus 3k. I think this is not clear, so let me cut this. C को हम काट देते हैं यहाँ से. नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं. And C equal to lambda I plus 2j plus 3k. So now the condition is given. Now according to the given condition, क्या बोला है कि वेक्टर ए, जो फर्स्ट वेक्टर है, इट इज ए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी. तो ए जो है, A and the scalar product of unit vector along the direction of b plus c. The scalar product is 1, then what is the value of lambda? इसका मतलब हमको पहले b plus c निकालना होगा और you have to find a unit vector along b plus c. तो पहले हम given पहले नहीं आएगा, क्या जाएगा हम लोग का unit vector along the sum of b and c. तो first you calculate, suppose n cap is the unit vector along b plus c. पहले इसको निकालना होगा. तो इफ यू गो फॉर द यूनिट वेक्टर along b plus c, क्या होगा? b plus c यू नो डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड. तो कितना आएगा? b plus c मतलब डायरेक्ट दिखाने से ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप, देन 6 j कैप, then minus 2k cap and whole divided by मोड. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सॉरी, ये ज़रा खराब दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको क्लियरली ड्रॉ करते. ठीक है. सो दिस इज स्क्वायर रूट 2 plus lambda whole square plus 36 plus 4. So finally you have got the unit vector along the direction of b plus c as 2 plus lambda I cap plus 6j minus 2k divided by this. तो इसको हम लोग पूरा ब्रेक नहीं करने से भी हम ऐसे रख सकते हैं. इसको 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर ही रख देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत हो सकता है. प्लस 40, दिस यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट यू गो फॉर द कंडीशन गिवन. तो गिवन क्या था? तो गिवन ये था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग b plus c, that is n cap, it is given 1.
तो यहाँ से हमको लैम्डा निकालना है। सो इट्स वेरी सिंपल नाउ। ए मतलब पहले ए को लिखो, आई प्लस जे प्लस के डॉट द होल वन, यू हैव टू राइट 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 ए माइनस 2k एंड होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये लाइन बहुत गड़बड़ हो गया, काम करते हैं पूरा काट देते हैं और इसको लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देना। सॉरी कलर एकदम ब्लैक ही रखो कलर। ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ what 2 plus lambda whole square plus 40, and that is equal to 1, and this is the dot को लिखना है। So now the calculation plus left, तो इसमें देखो 2 plus lambda plus 6j minus 2k है, तो कितना आएगा? If you go for the next page, therefore 2 plus lambda plus 6 कितना था, लिखना पड़ेगा वो 2 plus lambda plus 6 minus 2, 6 minus 2, 6 minus 2, and if you take it to the right hand side, under root कितना था 2 plus lambda whole square plus 40। तो अभी इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया lambda plus 6, you take their square, and the right hand side if you break inside the root, because you have taken square, so you can break it. So now lambda square plus 12 lambda plus 36 plus lambda square plus 4 lambda plus 44. So lambda square cancel, so 8 lambda equal to 8. So the value lambda you have got 1. So lambda जब 1 मिल गया तो हमको आंसर मिल गया। तो क्या होगा, वही निकालना था, सॉरी, और इसको आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो that is your answer, that is the value of lambda. Next question number 14. So you have given that ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, then show that the vector A plus B plus C is equally inclined to A, B and C. So you have given that given that A, B, C are mutually perpendicular vectors having the same magnitude, vectors of equal magnitude. So therefore you can consider them as, suppose say their magnitude they are equal and equal to say k, उसको हम k मान लिया। Then to show that it is equally inclined to A plus B plus C is equally inclined to A, B and C. Then what to show? To show that A plus B plus C
is equally inclined to A, B and C। तो इसको जब प्रूफ करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको ये करना होगा कि हमको ये दिखाना है कि यू टेक द एंगल्स मेड बाय ए प्लस बी प्लस सी विथ ए बी सी, देन यू शो दैट द एंगल्स आर इक्वल। तो उसके लिए हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय A plus B plus C with A, B and C respectively। यहाँ में आएगा कि नहीं पता नहीं, आएगा respectively। तो देन हमको दिखाना है कि ये एंगल्स इक्वल है। देन व्हाट टू शो दैट एंगल्स आर इक्वल, ये हमको दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हमको सिंपली एंगल्स को निकालना है। तो एंगल्स के लिए हमको पता है कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, हाउ टू कैलकुलेट। सो वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। सो नाउ इफ यू गो फॉर cos अल्फा फर्स्ट, क्या होगा cos अल्फा, a डॉट a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ a प्लस b प्लस c। तो यहाँ में a डॉट a होगा, इसमें सिर्फ a डॉट a आएगा। a डॉट a मतलब मोड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो ज़ीरो होगा, एंड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a देन मोड ऑफ a प्लस b प्लस c। सो नाउ यू कैन कैंसिल वन मोड ऑफ a, सो यू हैव गॉट, एक कैंसिल हो जाएगा, वन यू कैन कैंसिल, तो ओनली लेफ्ट है। सो लेट इट बी, इसका वैल्यू k है, k बाय देयर मॉडुलस। इसका मॉडुलस हम लोग नहीं निकालने से भी होगा। तो तुम देख सकते हो, सिमिलरली यू कैन चेक cos बीटा भी वही आएगा, k बाय मोड ऑफ a plus b plus c, and cos gamma also you'll get k by mode of a plus b plus c। So obviously therefore cos alpha, cos beta and cos gamma, they are equal, and therefore the angles are equal। So that is the proof that a plus b plus c is equally inclined to a, b and c। तो उसके बाद बाकी तीन क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस का है, तो इसको तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। सो बट आई विल गो फॉर 16, क्योंकि 16 में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें हमको दिया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन 16, तो उसमें हमको गिवन है, इसमें गिवन है a डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, provided theta is the angle between a and b। तो कंडीशन आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देखो इसमें ये जो एंगल लिया है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। नाउ a डॉट b ग्रेटर इक्वल टू 0 implies what? Mode of a mode of b cos theta greater equal to 0। तो जब ऐसा होगा तो हमको पता है कि मोड ऑफ ए बी दे आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये दो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट ग्रेटर इक्वल टू 0।
क्योंकि इसमें ये तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो इट मस्ट बी ऑल्सो पॉजिटिव. सो देयरफॉर cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये क्लियर है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी ये तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अभी क्या बोला है, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना है. तो यू नो दैट cos थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा लाइज इन बिटवीन, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सिंपल. So that is your answer. So that is the option B, I think. Option B is the correct answer. Okay, then go for the next page. The next question 17. तो 17 में क्या दिया है, A and B are two unit vectors, theta is the angle between them, then A plus B is a unit vector if, then for what value of theta A plus B is a unit vector. तो इसमें हमको ये दिया है, given that A, B and A plus B are unit vectors, and also given that, यहाँ वो डायग्राम में लिखा रहता है, also given that theta is the angle between them. So theta is the angle between them, it is given. Then you have to find out what is the value of theta. So now as we know that यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि इसका मॉडुलस 1 है. सो यू जस्ट एक्सप्लेन इट, यू टेक द स्क्वायर equal to 1, and you just remember one thing, when you take the square of a modulus, so it is almost same to that a plus b whole square in algebra. तो algebra में हम जैसे a plus b whole square लिखते हैं ऐसे ही आएगा ये. जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि a plus b whole square में क्या होता है, a square plus b square plus 2ab. तो यहाँ में इन प्लेस ऑफ a square आएगा mod of a square, इन प्लेस ऑफ b square क्या आएगा mod of b square, and in place of 2ab क्या आएगा 2a dot b. So that's the only difference. बाकी formula complete same है. And you know that they are unit vectors, so their values are 1, and you can break a dot b by mod of a mod of b into cos theta equal to 1. तो एक 1 को तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. सो अनदर 1 इफ यू टेक इनटू द राइट हैंड साइड, तो यहाँ में देखो 2, ये 1 है, देन cos theta and this is -1. So cos theta is equal to -half. तो -half का मतलब कितना होगा, इट इज माइनस cos π/3, और cos π/3 माइनस का मतलब इट विल बी इन द नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा एंगल π - थीटा. सो π - π/3, सो इट इज cos of 2π/3. So therefore the value of theta is, value of theta is 2π/3. So that is your answer. तो इसका मतलब option D is the correct answer. Then go for next page and next question, that is question number 18. So it is given as, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम लोग भी कर सकते हो, I dot j cross k प्लस j dot I cross k plus k dot I cross j.
इसका वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल है, तुम एक एक करके निकल जाओ। पहले जे क्रॉस के का वैल्यू हमको पता है कि आई होगा, फिर आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा? ये तो के क्रॉस आई होने से जे होना था, तो आई क्रॉस जे तो माइनस जे होगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो डेट फॉलोज द साइक्लिक ऑर्डर, सो आई क्रॉस के इज नेगेटिव, सो माइनस जे। देन के डॉट आई क्रॉस जे का मतलब के होगा, सो आई डॉट आई mod of I square, then there is minus, तो माइनस जे डॉट जे मतलब माइनस mod of j square, then k dot k mod of k square। इसका तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1, तो एक 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1। तो दैट इज द आंसर फॉर 18, मतलब इसका आंसर हो गया C। Then next question, there is the last question for miscellaneous, is question number 9. In question number 9 it is given that mod of A dot B is equal to mod of A cross B, and also given that theta is the angle between them। तो हमको निकालना है थीटा को। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट ब्रेक देम। मोड ऑफ ए डॉट बी मतलब होगा मोड ऑफ ए mod of b into cos theta, and this is mod of a cross b मतलब mod of a mod of b, then sin theta आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, then cos theta by sin theta, so you can cancel them now, so you'll get sin by cos। If you take cos theta into the right hand side and write in left hand side, you'll get this, so that is tan theta equal to 1, so theta must be what? Obviously pi by 4, so that is your answer for question number 19, so B is the correct option। सो ओके देन, तो आज के लिए ख़त्म हो गया ये मिसलेनियस, तो फैक्टर का मिसलेनियस भी ख़त्म। सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन हम देंगे उसमें इम्पोर्टेंट, तो उसको तुम लोग ट्राई करना, और नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके ओके देन, बाय।